रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Today's our lesson is Allah is our creator. We all know that Allah has given us many wonderful gifts of our eyes, our ears, our tongue, our whole body. अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे बेशुमार गिफ्ट्स दिए हैं। हमारी आँखें, हमारे कान, हमारी टंग, ज़बान और ये पूरी बॉडी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है। Allah is not merely our creator, He is our sustainer also. He is the sustainer of all His creations. He is not merely our creator, He has not only created us, but He is sustaining us also. He is giving us food we eat, He is giving us air we breathe. We are growing, our du'as are answered, so He is sustaining us also. अल्लाह ताला सिर्फ हमारा क्रिएटर नहीं है, हमारा खालिक नहीं है, वो हमें सस्टेन भी करता है, हमारी दुआएं भी सुनता है, हमें खाना भी देता है, हमें हवा देता है जिससे हम सांस लेते हैं, तो वो सस्टेन भी कर रहा है हमें. He is the sustainer of all His creation. Not only us, but all His creation is sustained by Allah. He has been sustaining the human race from the time of the first man. Who was the first man? Yes, Adam alayhi salam. Down to this very day and right now too. From the starting till now, He is sustaining His human race. He is sustaining everything. अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, तब से लेके अब तक अल्लाह ताला हर चीज़ को सस्टेन कर रहा है. He is the sustainer of us all. But how can we learn all about Allah? हमें कैसे पता चलेगा अल्लाह के बारे में बहुत ज़्यादा? हमें अल्लाह के बारे में बहुत ज़्यादा जानना है, क्योंकि वो हमारा क्रिएटर है, वो हमारा सस्टेनर है. We all have to learn so much about Allah because Allah is our creator, He is our sustainer. So we can learn about Allah by studying the Quran. If we will study the Quran, we will learn more and more about Allah. हम अगर कुरान पढ़ेंगे, कुरान को हम समझेंगे, तो हम अल्लाह ताला के बारे में और ज़्यादा जानेंगे. We can learn about Allah by looking around at nature. हम कुरान से भी अल्लाह ताला को जान सकते हैं और नेचर को देख के भी. We can learn about Allah by reciting Quran, by understanding Quran and by looking around it at nature. Everything in nature has a message to give. Each and everything in nature has a message to give. The Holy Quran even appeals to us to observe the objects of nature. What comes in nature? The sun, the moon, the sky, the flowers, vegetables, fruits, everything comes in objects of nature. So if we will watch each and everything, if we will observe each and every object of nature, we will come to know that how Allah has created all these things and Allah is sustaining everything. So He is the creator of everything, so we can know more about Allah.
दो तरह से हम अल्लाह के बारे में जान सकते हैं। एक हम कुरान को पढ़ के, कुरान को समझ के, दूसरा हम नेचर को देख के। जब हम नेचर को देखते हैं, नेचर की छोटी छोटी चीज़ें हम देखते हैं, हम आसमान को देखते हैं, हम ज़मीन को देखते हैं, हम फूलों को देखते हैं, इन सब चीज़ों से भी हम अल्लाह के बारे में और जान सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। बट ओनली अ फ्यू पीपल गिव थॉट टू दिस। लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस तरह से नेचर की चीज़ों को देख के सोचते हैं। कुरान आस्क, कुरान हमसे पूछता है, डू दे नॉट गेज एट द वाटर कैरिंग क्लाउड्स? क्या वो नहीं देखते कि कितने बड़े बड़े क्लाउड्स वाटर कैरी करते हैं? दे आर ह्यूज clouds are there which carry water. And the sky, how it is raised? Do people not see the sky, how it is raised? क्या लोग नहीं देखते कि किस तरह से बादल पानी को लेकर जाते हैं, और स्काई जो आसमान है अल्लाह ताला ने किस तरह से ऊंचा किया है? क्या वो नहीं देखते? Do they not gaze at the water carrying clouds and the sky, how it is raised? And the earth, how it is spread out? So we should see, by looking at the nature also, it's also a kind of worship, because in Quran so many verses are there about earth, about sky, about clouds. So if we will watch them carefully, so we will be obeying the verses of Allah, and we can know more about Allah by observing the objects of nature. And the mountains, how firmly they are fixed. Have you seen the mountains? How firmly they are fixed. क्या आपने माउंटेन्स को देखा है? किस तरह से वो फिक्स किए गए हैं अर्थ में। क्यों? ताकि अर्थ हिले ना। Do they not look at the camel, how it is shaped? The scene is full of beauty and design. Have you seen camel? This is also a verse in Surah Al-Ghashiyah, that have you not seen camel, how it is shaped? Allah asks us to see the camel, and see how it is shaped, how people can sit on it, and how people can travel on camel. The scene is full of beauty and design. अल्लाह ताला सूरह अल-गाशिया में फरमाते हैं कि आप देखें कैमल को, ऊँट को देखें, किस तरह से अल्लाह ताला ने उसे डिज़ाइन किया है, और ये सब चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं। Can any of can anybody can make these things? It is Allah who has spread the earth. ये अल्लाह ही है जिसने अर्थ को स्प्रेड किया है। And the sky he raised high. अल्लाह ने ही आसमान को ऊंचा किया है। It is he who has hung there the lamps of the sun and the moon. अल्लाह ने ही सन और मून को लैम्प्स की तरह बनाया है। It is Allah who has grown the fruits, the date palms and the pomegranate. अल्लाह ही फ्रूट्स हमारे लिए, हम फ्रूट्स ग्रो करते हैं तो वो अल्लाह ही की तरफ से होता है। द डेट पाम्स एंड द पोमग्रेनेट्स, ये सारे फ्रूट्स कौन ग्रो करता है? अल्लाह ताला ग्रो करते हैं। क्या हम कोई फ्रूट बना सकते हैं? कैन वी मेक एनी ऑफ दिस फ्रूट? नो, वी कांट मेक।
Allah made the flowers and the sweet smelling plants. So many different types of flowers are there. Allah has created them, Allah has made them. अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत फ्लावर्स बनाए हैं और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी स्मेल आती है उसमें से, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये सब अल्लाह की तरफ से है। Allah made the meadows green and made the water that flows. It is He who made the mighty oceans. इतने बड़े बड़े ओशंस, ये सब किसने बनाए हैं? ये सब अल्लाह ने बनाए हैं। And the lofty mountains, इतने ऊंचे माउंटेन्स, ये सब अल्लाह ताला ने बनाए हैं। It is He who made the rubies and the pearls. From the sounding clay, He created men. Who was the first man created? Yes, it was Adam alayhi salam. He was created by sounding clay. Allah created Adam alayhi salam, the first man, from sounding clay. He gave him the speech. He gave him the power of speech and the power of thought. We can speak, we can thought. So who has given this power? Allah has given us this power. हम बोल सकते हैं, हम सोच सकते हैं। ये ताकत हमें अल्लाह ताला ने दी है। He created the jinns from a clear flame of fire. अल्लाह ताला ने इंसानों के साथ साथ जिनों को भी बनाया है clear flame of fire से। He created the jinns from a clear flame of fire. And from light he created angels. Angels are created from light. अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया है। How can man, seeing all these things, fail to turn to Allah? इतना सब कुछ देखने के बाद भी इंसान क्यों अल्लाह की तरफ नहीं पलटता, क्यों अल्लाह की इबादत नहीं करता? Turn to Allah before you return to Allah. How can he fail to turn to his Creator, before whom he will stand to be judged one day? That will be the day of judgment. On that day, each and every one, from the beginning till end, will stand before Allah. How can we fail to turn to his Creator? How can he fail? Means how can a man fails to turn to his Creator? क्यों लोग अल्लाह की तरफ नहीं पलटते, क्यों अल्लाह की इबादत नहीं करते, जबकि हम सबको एक दिन अल्लाह ताला के सामने मैदान हशर में खड़े होना है। Now let us do the activity. Answer these questions. Question number 1. Mention some of the wonderful gifts given to us by Allah. Answer. Allah has given us many wonderful gifts of ears, eyes, tongue, and our whole body. Who has been the sustainer of all men from Adam down to this day? It's Allah. What are the various ways to know about Allah? Mention some of them. How can we know more about Allah? We can learn about Allah by studying the Quran, and we can learn about Allah by looking around at nature. हम कुरान पढ़ के और नेचर को देख के अल्लाह ताला के बारे में और जान सकते हैं।
What does the Holy Quran appeal to us to do? कुरान हमें क्या करने के लिए कहता है? The Holy Quran appeals to us to observe the objects of nature. कुरान हमें कहता है कि हमें नेचर के ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहिए, उन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए. We should ponder on them. We should think how Allah has created all these things. Write 10 sentences about Allah's creations. Allah has created the sun. Allah has created the moon. Allah has created the sky. Allah has created the earth. Allah has created the flowers, the fruits, animals, birds, men, jinn, etc. Mention a few of the wonderful gifts we enjoy given to us by Allah, other than mentioned in this lesson. This you have to do yourself. What is man created from? Man is created from the sounding clay. अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया है, खनखनाती मिट्टी से. What are the jinns created from? The jinns are created from a clear flame of fire. अल्लाह ताला ने जिन्नों को आग से बनाया है. Now fill in the blanks. Everything in nature has a message to give. Do they not look at the camel, how it is shaped? How can one, seeing all these things, fail to turn to Allah? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.